अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी को मार गिराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक ने वीडियो के कुछ हिस्से भी जारी किए। आप देखें रिपोर्टर, मुझे दें इजाजत। आदाब। इदलिब में अमेरिकी कमांडो के ऑपरेशन का वीडियो अमेरिका ने डिक्लासिफाई कर दिया है। वीडियो में अमेरिकी कमांडो इदलिब में बगदादी के ठिकाने की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने पेंटागन में मीडिया को इस ऑपरेशन की तफसील भी बताई। Once the assault force arrived at the compound, fighters from 2 locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault. These individuals, who we don't assess were affiliated with Baghdadi, but nonetheless demonstrated hostile intent against U.S. forces, were killed by 2 airstrikes from supporting helicopters. जनरल फ्रैंक ने मीडिया को बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान ISIS के दीगर 6 अफराद भी मारे गए, जबकि 2 बच्चे जिनकी उम्र शायद 12 बरस से कम थी उस वक्त हलाक हुए जब बगदादी ने बम बंधी जैकेट को धमाके से उड़ा दिया। U.S. forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel. When capture at the hands of U.S. forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb he wore, killing himself and 2 young children that were with him. The number 2 is a change. We originally thought there were 3 children with him, and this is the number we originally reported up the chain of command. We now know the number to be 2 based on subsequent debriefing. A total of 6 ISIS members died on the objective. 4 were women, and there were 2 men, including Baghdadi. This is in addition to the 2 children killed by Baghdadi as he blew himself up. Let me emphasize again that 11 children were protected by the assault force, and 2 men on the objective were detained by the assault force and they were extracted with the force. मैकेंजी ने यह भी बताया कि बगदाद के ठिकाने से 12 बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया है।